Hello, children. Children, as we have started addressing population, and I have uploaded part 1 of addressing population. In that video, we have gone through population, population explosion, and the factors which are responsible for population explosion. Here, we are going to study the adverse impacts of population explosion. Let's see the first one. The first one is resource depletion. Now, because of the increase in the number of the individuals, that is because of the increase in the population, there is the rise in demand. And because of that, the production will also increase, which will lead to exploitation of resources. Means to meet the demand, more and more resources will be exploited. So, there will be decrease in the resources. Then stress on civic amenities. Increase in population put pressure on food. This means that the demand of the food increases. Put pressure on shelter means we need more and more land. Demand for electricity, demand for transportation. Now transportation facility means more and more fossil fuels will be required, more public transport or the individual vehicles will be required. Then water supply demand, medical services demand, and also the demand for educational institutions will increase. And the increase in population will put more pressure on food, shelter, electricity, transportation, water supply, medical services, and educational institutions, and many more. So, this will put pressure on the civic amenities. Then, shortage of space. Higher the number of individual leads to overcrowding on land. Means wherever you go, you will find more and more people. So this will lead to shortage of space. Okay. Then deforestation. This means cutting of trees. Now why trees are cut? Why deforestation is done? Because we require agricultural field for performing agriculture. For human settlements, we need to make home. For mining also we need land. For developmental activities like infrastructure development and all, land is required. That's why deforestation is done. Then land degradation. The increase in the demand of food led to intensive farming. Intensive farming means growing variety of crops on the same land. Now because of that, there is a decrease in the soil fertility. That's why this led to land degradation. Now infrastructure development. Infrastructure development means the change in the use in land use pattern. We can say that the development of highways, development of railway tracks, development of factories, industries, all these things. So this is infrastructure development. Then because of the increase in the population, more and more infrastructure, more and more highways and all these things will be made. Then stress on fossil fuels. More individual means more production, and more production means more use of machinery. Also, there will be more use of public transport, thereby putting pressure on fossil fuels. Means the use of machinery will require the fuel. Also, the transport facility will require the fuel. This will put pressure on fossil fuels, because you know that the fossil fuels are takes a lot of time to generate. Okay. Then more generation of waste. Now because of there is an increase in population, high rate of production will be there and consumption will also be there. Therefore there will be increase in the amount of waste, which can lead to variety of diseases, and that will also spoil the beauty of surroundings. So this was about the adverse impacts of population explosion. Let us revise quickly कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है. मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या बुरे इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट्स ना. तो पहला है रिसोर्स डिप्लीशन. रिसोर्स क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं. क्यों कम होने लगते हैं? क्योंकि जैसे जैसे लोगों का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी. हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी हो. और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन भी हाई किया जाएगा.
और जब प्रोडक्शन हाई किया जाएगा तो रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जिसकी वजह से रिसोर्स क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। स्ट्रेस ऑन सिविक एम्यूनिटीज़, जो भी सिविक या पब्लिक एम्यूनिटीज़ हैं उस पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। क्यों प्रेशर पड़ने लगता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन होगा, शेल्टर की डिमांड बढ़ेगी यानी कि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, उसका भी डिमांड बढ़ेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ेगी, वाटर सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी, मेडिकल सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बढ़ती है। तो जितने ज़्यादा बनने भी लगेंगे उस हिसाब से अगर आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में तो इन सारी एम्यूनिटीज़ पर असर पड़ेगा, इन सारी एम्यूनिटीज़ पर प्रेशर पड़ेगा। अब बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ स्पेस की। जहाँ पर भी आप जाएंगे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली जगह क्या हो जाएगी, कम होगी। हर जगह आपको लैंड चाहिए रहने के लिए, आप ढूंढेंगे, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी लैंड चाहिए, तो उससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी जगह जगह और जगह की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। फिर आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए किया जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए किया जाता है, माइनिंग के लिए किया जाता है, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। देखिए, फूड की डिमांड बढ़ने की वजह से इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना। तो जब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम ग्रो करने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी होने लगती है कम, तो इसकी वजह से क्या होगा, लैंड डिग्रेड करने लगता है। मतलब सॉइल की क्वालिटी अगर ख़राब हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब है सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, और क्वालिटी ख़राब हो रही है यानी कि लैंड डिग्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। कहीं पर भी जाते हैं आप, बिल्डिंग्स देखते हैं, हाईवेज़ देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जगह कम हो रही है, रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है। हम पेड़ों को काट रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एडवर्स इम्पैक्ट। अब स्ट्रेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होना है, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होना है, मशीनरी का यूज़ होना है। मशीन को यूज़ करेंगे तो दैट विल रिक्वायर अ फ्यूल, उसकी वजह से क्या हम यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। लोग ज़्यादा होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ होगी तो फॉसिल फ्यूल खर्च होगा। फिर आता है मोर जनरेशन ऑफ वेस्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो वेस्ट का भी अमाउंट उतना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ और हमारी सराउंडिंग्स की ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये हो गए हमारे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Thank you. Please like, share and subscribe.